Multiple choice questions of chapter 1 class 9 number system. Now question number 1 is in 7 root 5, 7 by root 5, 77 and pi minus 2. Which one is a rational number? So we know that 7 root 5 irrational, 7 by root 5 is also irrational, pi is an irrational number. Therefore 77 is a rational number. Now the option C is right. Okay. Question number 2. The simplified value of 16 raised to power minus 1 by 4 into 16 raised to power 1 by 4 is, now you can solve 16 raised to power minus 1 by 4 into 16 raised to power 1 by 4. Okay. So this is a 2 raised to power 4, 16 equal to 2 raised to power 4 minus 1 by 4 and 2 raised to power 4 into 1 by 4. It means 2 raised to power minus 1 is 2 by 2. It is equal to 1. The right answer is 16, 4, 1, 0. Right answer is 1. Next, 3 upon under root 48 minus root 75 is equal to. So now you can solve 3 upon root 48 is 4 root 3. 4 4 just 16 into 3 root 48 minus root 75 is 5 root 3. Then it is equal to the 3 upon minus root 3. Now rationalize root 3 into root 3. So we get 3, cancel. It is equal to the minus root 3. So which option is right? Minus root 3. Okay. The next one is the value of 256 raised to power 0.16 into 256 raised to power 0.09. We know that the bases are same. Therefore, we can add the exponents. So now 256 raised to power 0.16 plus 0.29, 0.25. Okay. So 256 raised to power 0.25 we can write 1 by 4. In the decimal convert करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? Power 1 by 4. So it is 4 raised to power 4 into 1 by 4. 256 equal to 4 raised to power 4. It is equal to 4. The answer is 4, 16, 64, 256.25. The answer is 4. Next, an irrational number between root 3 and root 5. Okay. So we can find two irrational number between one irrational number between two numbers under root AB. Okay, this is a formula. So now under root AB is under root 3 into root 5. It is equal to the root 15. Under root 15 means 1 by 2 root. इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 15 raised to power 1 by 2. Under root means है. So now 15 1 by 2 raised to power 1 by 2, it is equal to the 1 by 4. Now the answer is 15 raised to power 1 by 4. Next, x equal to 2 plus root 3, then 1 by x is equal to, ये आपको पता है, रेशनलाइज करना है, 2 plus root 3. Now multiplied by a rationalizing factor 2 minus root 3 in numerator and denominator. Now 2 minus root 3. In denominator, 2 plus root 3 into 2 minus root 3 is 2 square minus root 3 square. It is equal to 1. Therefore, 2 minus root 3. The right option is 2 minus root 3. The next, the decimal representation of a rational number cannot be. Decimal representation of a rational number नहीं हो सकता. क्या? Terminating हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता. बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. ओके. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल, जरूरी नहीं है. ऑलवेज इरेशनल, ये भी जरूरी नहीं है. ऑलवेज एन इंटीजर, नो. समटाइम्स रेशनल, समटाइम्स irrational. देखिए एग्जाम्पल लीजिए. इफ वी मल्टीप्लाइड रूट, दिस इज ए irrational number and this is also an irrational number. Now multiply
we get 1. If we multiplied root 3 into root 5, both are irrational, we get root 15. तो कभी इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? समटाइम्स रेशनल, समटाइम्स इरेशनल. नेक्स्ट, -2 minus root 3 and -2 plus root 3 when simplified. देखिए माइनस कॉमन, 2 plus root 3 एंड इन दिस root 3 minus 2. इसको ऐसे लिख सकते हैं root 3 minus 2. तो a plus b, a minus b means root 3 square minus 2 square. It is 3 minus 4 minus 1 and minus minus plus 1. The answer is 1. 1 means positive and rational. So which one is the right? Positive and rational. 1 is a rational number and positive. Okay. Now question number 10. Between 1 by 7 and 8 by 7, we can insert no irrational number, infinitely many rational numbers, infinitely many integers, only one rational number, and infinitely many rational numbers. इन दोनों के बीच में हम लोग बहुत सारे रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल? 1 plus root 3 इरेशनल है, पाई इज ऑल्सो इरेशनल, 2 by root 3 इरेशनल, 2 root 3 इरेशनल एंड 0 इज ए रेशनल नंबर. 0 को हम लोग पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. कोई भी नंबर 0 के नीचे लगा देंगे तो इट विल बिकम ए रेशनल नंबर. नेक्स्ट, इफ रूट 2 इज लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन, then it lies at 2, between 1 and 2, between 0 and 1, at 4. It is between 1 and 2 because the value of root 2 is 1.414. Okay, so between 1 and 2. Question number 13. The rationalizing factor of 2 cube root of 5. अब देखिए इसको रेशनलाइज करने के लिए 5 raised to power क्या दिया हुआ है? 1/3. 2 तो है ये. अब इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि रेशनल हो जाए? तो 5 raised to power 2/3. तो वी गेट 2 into 5, 10. तो रेशनल बनाने के लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 raised to power 2/3. इट मीन्स दिस. हम लोग थर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं 2/3. ओके. द नेक्स्ट, इफ x is greater than 0, then root x, root x, root x. Now solve. First root. This one is x raised to power 1/2. Now add the powers of this. You get x raised to power 3/2. Okay. 1 plus 1/2 is 3/2. Next, under root. X raised to power 3/2 into 1/2. Because under root value is 1/2. It is equal to under root x raised to power 3/4. Now under root it will become x raised to power 3/4 raised to power 1/2. So we get x raised to power 3/8. So we can write 8 here and x cube. The right answer is x 3/2. X raised to power 3/2 into, here is also x. Oh sorry, यहाँ x होगा, यहाँ भी x होगा. तो x plus, if x is greater than 0, then under root x and root x equals to. Now we will solve, then find the value of this one. See, root x and then root x. Okay. So now x root x into x raised to power 1/2. ये root x को लिखेंगे x की पावर 1/2. Now add the powers of x. So we get root x raised to power 1 plus 1/2 is 3/2. Now again root x 3/2 raised to power 1/2, it is 3/4. 3/2 power 1/2, 3/4. Now add the powers of x. 1 plus 3/4 is 7/4. Okay. So now under root x raised to power 7/4 raised to power whole 1/2. This will be equal to the x raised to power 7/8. So we can write in the third form. 8 बाहर जाता है, x raised to power 7.
नाउ द राइट आंसर इज 8x⁻7. ये भी नहीं होगा, ये होगा. नेक्स्ट 256 x⁻16 अपॉन 81 y⁴ होल पावर -1/4. देखिए 256 को हम लोग लिखेंगे 4 की पावर 4 x⁻16 और नीचे लिखेंगे 3 की पावर 4 y की पावर 4 होल पावर -1/4. ओके, so now multiplied by -1/4 in each term. So we get 4 minus 1 x⁻4 upon 3 raised to power -1 y raised to power -1. -1/4 का सभी में मल्टीप्लाई किए. अब माइनस पावर है तो इसको ऊपर ले जाएंगे और नीचे हो जाएगा 4x⁻4. ऊपर नीचे कर देंगे रेसिप्रोकल. तो राइट आंसर इज बी. ओके, now the next, if x is square equal to 5 then variable x represent. तो x is square equal to 5 means x equal to √5. तो ये क्या होगा, इंटीजर नहीं, रेशनल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर नहीं, एंड इरेशनल नंबर. वी नो दैट √5 is an irrational number. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर सर्ड. प्योर सर्ड मीन्स ये मिक्स सर्ड है, सब में अंडर रूट लगाए लेकिन आगे वैल्यू है. प्योर सर्ड क्या है, √5. टोटल इस पर पावर है 5⁻1/2. क्वेश्चन नंबर 18. फॉर एन इंटीजर n, ए स्टूडेंट स्टेट द फॉलोइंग. इफ n इज ऑड, n + 1 होल स्क्वायर इज इवन. इफ n इज इवन, n - 1 होल स्क्वायर इज ऑड. इफ n इज इवन, √n - 1 is irrational. Which of the above is true? First and second are true. This is true. This is true. This is false. Now the first and second are true. Okay. The next, if cube root of 22x - 7 - 5 = 0, so we can write cube root of 22x - 7 = 5. ये -5 है, इसको ले जाएंगे पॉजिटिव साइड. वी गेट, अब क्यूब रूट है तो बोथ साइड क्यूब करेंगे, क्यूब बोथ साइड. तो यहां से क्यूब रूट हट जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 5 क्यूब बोथ साइड. इट मीन्स 22x - 7 = 125. नाउ 22x = 125 + 7 132. x = 132/22. This will equal to 6 times. The answer is 2468. It is equal to 6. And the last question, state whether the following statements are true or false. देखिए, फर्स्ट है 0 is the smallest natural number. क्लियर false, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 etc. एवरी नेचुरल नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर. यस, नेचुरल नंबर 1 2 3 है, इट मीन्स positive integers. So second one is true, first one is false. Now the option are both 1 and 2 are true. Nahi. First true, second false. Wrong. Both are false. No. First false, second is true. The D option is right. Okay. Thank you.